Hey English students, welcome to our YouTube channel. In this video, we will going to discuss the summary of the essay Does Culture Matter by Forster. Along with discussing summary, we will also delve into discussing some important points that will make you clear about the whole essay, the very important concept of the essay Does Culture Matter. So, without wasting any time, let's get started together. But before moving ahead, if you haven't subscribed the channel, so please subscribe it and also hit the bell icon so that you may get any new notifications. So, let's get started. Dear viewers, ये जो डस्ट कल्चर मैटर ये एक ऐसे था जो कि ये एक ऐसे है जो कि फॉस्टर ने लिखा हुआ है. Forster stands for its full abbreviation is Edward Morgan Forster. He was born in 1879 and died in 1970. So it means he belonged to modern era. So it means कि इस ऐसे में कुछ ना कुछ मॉडर्न एज से रिलेटेड बयान किया हुआ होगा. इट्स मीन्स के इसमें कुछ ना कुछ मॉडर्निज्म के एस्पेक्ट्स, कुछ ना कुछ मॉडर्न एज मॉडर्न मैन पर क्रिटिसिज्म की हुई होगी. हमें इस तरह की चीज़ें इस ऐसे में ज़रूर मिलेंगी एंड इट इज़ ट्रू. हमें इसमें मॉडर्न मैन पर क्रिटिसिज्म करता हुआ फॉस्टर करता हुआ दिखाई देता है, एज वेल एज हमें इसमें मॉडर्न एज की कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करने हुए अभी ये फॉस्टर हमें नज़र आता है. If we talk about the date of written, so the exact date of written is not known, and if we talk about the date of publication, so it was published on October 4, 1940 by the Spectator Archive. ये Spectator Archive basically एक British weekly magazine थी that has been in publication since 1828. Okay, ये जो नीचे मैंने 2 quotes यहाँ पे नोट किए हुए हैं. Culture is a forbidding word and faith makes one unkind. These are the 2 important quotes that you can find in the essay Does Culture Matter? लेकिन इन कोट्स को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी. When you will get through the whole video till end, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि इन 2 कोट्स का क्या मतलब है. So, summary. The essay Does Culture Matter by Forster is taken from the collection of essays 2 Cheers for Democracy. Remember that the tone of the essay is what? It is satirical and it is ironic, and the basic idea and the basic theme of the essay is what? That it discusses the decline of culture. जनरेशन गैप को ये डिस्कस करता है और डिक्लाइन ऑफ कल्चर को ये डिस्कस करता है. ठीक है. Okay, so 2 Cheers for Democracy. 2 Cheers for Democracy is a collection of essays. It is a book that is a collection of essays where Forster wrote a large number of essays, and all those essays explore various aspects of democracy, politics, and culture. This book was published in 1951, and it was a thoughtful and nuanced exploration of the concept of democracy. Forster argues that democracy is a flawed but essential system worthy of 2 cheers rather than 3. He believes that democracy has the potential to bring about great good, but it is also imperfect and can lead to tyranny and oppression not balanced with individual freedom and creativity. So this essay, Does Culture Matter, can be found in his collection 2 Cheers for 2 Cheers for Democracy. It is a masterpiece essay nicely written by Edward Morgan Forster, who is popularly known as one of the greatest essayist, novelist. essayist में हम इसकी एग्जाम्पल Does Culture Matter से देख सकते हैं. Okay, so basically जो ऐसे है ये हमारे पास 20th century ये जो ऐसे है ये हमारे पास कोर्स में इंक्लूड है Does Culture Matter.
So we can find its example here. Novelist, the very important novel जो है वो हमारे पास है A Passage to India. Short story writer, artist, and above all a philosopher in modern history of British English literature. So far as essay is concerned, so Forster wrote a series of essays which are based on different issues such as culture and civilization, moral and humanity, social and political, public and justice. Among a galaxy of essays, Does Culture Matter is one of them, in which the author has introduced the social structure or the modern societies of the world. Forster was a contemporary of D.H. Lawrence, James Joyce and Virginia Woolf as well. And we can see कि जो three writers हैं, ये novelists हैं, we can see that they belong to modern era से, okay? तो ये जो थे ना, contemporary means जो आपके साथ होते हैं, जो आपके era में आपके हम सफ़र होते हैं, means आपके era में आपके साथ साथ होते हैं. predecessors वो होते हैं जो आपको पीछे जो आपके पीछे होते हैं, और successors वो होते हैं जो आपसे आगे आने वाले होते हैं. He was famed by writing novels, biographies, and essays. His two famous collective essays are Two Cheers for Democracy and Ebinger Harvest. Two Cheers for Democracy, I have told you in a previous slide, and Ebinger Harvest, it was a collection of essays that was published in 1936. और इसमें जो एसेस लिखी गई हैं उसमें एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने ऐसे जब वो 1903 से लेकर 1935 तक के एरा में उसने जितनी भी एसेस लिखी दैट गेट पब्लिश्ड इन दिस collection, which consists of late masterpiece essays based on moral, cultural, civilization, social culture of England as well. Like Matthew Arnold and T.S. Eliot, they were also his, we can say, his contemporary. Forster also enjoyed in English literature. In this essay means Does Culture Matter? Forster basically described the basic foundation of culture. Basic foundation कि culture किस चीज़ से बना हुआ है, basic pillars उसके क्या हैं. He says that civilization is the organization of culture. Obviously civilization, what is meant by civilization? Civilization means मुहज़्ज़ब. जैसे ये एक नाउन है और ये सिविलाइज वर्ब से जब हम उसमें ऐड कर लेते हैं आई ओ एन, सो इट बिकम्स नाउन. सो व्हाट इज मीन बाय सिविलाइजेशन? अगर आप लोग याद हो तो इंग्लिश जिस पर्पज से आए थे टू इंग्लैंड, टू इंडिया, सो दे केम टू इंडिया इन ऑर्डर टू रूल इंडिया बाय सेइंग दैट इंडिया आर अनसिविलाइज्ड पीपल एंड वी हैव टू सिविलाइज दैम. हमने इनको मुहस्सिब बनाना है, हमने इनको रूल सिखाने हैं, हमने इनको ज़िंदगी को उसूल सिखाने हैं. सो जो कल्चर है ये सिविलाइजेशन बेसिकली क्या है मीन्स कल्चर बेसिकली कंसिस्ट कल्चर मीन्स सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, लैंग्वेज एंड मैनी मोर थिंग्स एंड दीज थिंग्स मेक यू व्हाट सिविलाइज्ड, मेक यू व्हाट जो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देती है. जब आप रूल्स तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और जो चीज़ से आपको मना किया गया है आप वो चीज़ नहीं करते तो आप सिविलाइज हो जाते हैं. Culture cannot be formed without civilization, okay, obviously. In the same way, civilization cannot be thought without culture, means both are interconnected, interdependent, interrelated to each other. There can be a slight difference between civilization and culture. Both culture and civilization of any nation make the people highly cultural, ऑनेस्ट, सिविलाइज्ड एंड डिसिप्लिन. ऑब्वियसली जब आप आपकी सोसाइटी के रूल्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ बिलीव्स होंगी और आप उन सब पे अमल करेंगे तो आप एक डिसिप्लिन, एक ऑनेस्ट और एक सिविलाइज्ड पर्सन बन जाएंगे. एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी नॉर्म्स एंड यू हैवंट एनी वैल्यूज़, एनी बिलीव्स, फिर तो आप एक वाइल्ड पर्सन हैं, एक जंगली पर्सन हैं. Forster advocates culture, which is a key wealth to improve the human society. Why it is a key wealth to improve human society? Obviously, culture give you some norms, some values, some beliefs. In this context, the author says, अब देखिए जो मैंने फर्स्ट कोट नोट किया था,
कल्चर इज़ अ फॉरबिडिंग वर्ड, ये स्टार्टिंग लाइन्स है बिल्कुल ऐसे की. I have to use it, knowing of none better, to describe the various beautiful which men have made in the past and handed down to us, and which some of us are hoping to hang on. Culture is a forbidding. Forbidding means prohibited or threatening word. Why culture is a forbidding word? Because he is criticizing modern man. ये जो modern age में रहने वाले people हैं, modern लोग हैं, they haven't any time to follow their culture, to read their culture, to dwell into their past, to study their past, to stay attached with their past. तो culture क्या है? Modern age में एक prohibited word है. बट मैं फिर भी इसको यूज़ करूँगा. और क्या किस ये नोइंग ऑफ नन बेटर मीन्स कि मैं इससे कुछ ना कुछ तो बेहतर कर सकता हूँ. ठीक है, टू डिस्क्राइब, क्योंकि मैं इस वर्ड के ज़रिए मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में. बेसिकली इस लाइन में ना, ब्यूटीफुल विच मैन हैव मेड इन द पास्ट, ये कल्चर की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फॉस्टर. ओके, व्हाट डज इट मीन वेरियस ब्यूटीफुल विच मैन हैव मेड इन द पास्ट? इसका मतलब ये है कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर पाकिस्तानी, और एज अ पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तानी कल्चर है. अब पाकिस्तानी कल्चर प्रेजेंट का कल्चर तो नहीं है. दिस कल्चर इट्स रूट्स लाइज सम मैनी ईयर्स अगो. हमारे पास्ट की जो हमारे एंशियंट थे, हमारे जो इंसेस्टर्स थे, हमारे दो अजदाद थे, उससे एक कल्चर जो है वो आगे जाके हमारे पास अभी वो कल्चर मौजूद है. सो पास्ट से वो आया है प्रेजेंट तक. ओके, सो और क्या है, एक खूबसूरत हो, जैसे हमारे एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड है, हमारे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज कोड है, एक फूड कोड है. तो ये बेसिकली ऑल दीज कम अंडर द वर्ड कल्चर. हमारा स्पेसिफिक रिलीजन है. ओके, सो मैं कल्चर का वर्ड मीन्स फोस्टर कहता है कि मैं कल्चर का वर्ड जो कि इस एरा में तो फॉरबिड है, प्रोहिबिटेड है, लेना मना है, लेकिन मैं फिर भी इसको यूज़ करूँगा खूबसूरत चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि मैंने किए इन दी पास्ट. और फिर वो उसको आगे जनरेशन तक दिए. और हम में से भी जो है ना लोग इनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो भी इससे आगे जनरेशन को देंगे. सो होप सो यू हैव गॉट द आइडिया दैट the quotation culture is a forbidding word, how it is a forbidding word. Forster always advocates the past tradition works on as the mirror of modern age. Past tradition works on as the mirror of modern age means कि फॉस्टर हमेशा जो है ना पास्ट ट्रेडिशनल वर्क्स को प्रायोरिटी देता था. क्यों प्रायोरिटी देता था? एंड ही सेज, ही एडवोकेट्स दैट इट इज़ वर्क्स ऑन एज द मिरर ऑफ मॉडर्न एज. फॉर इस प्रेजेंट, यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट एंड पास्ट की. जो प्रेजेंट मॉडर्न एज है, पास्ट हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासिकल वर्क्स हो गए. तो जो प्रेजेंट के राइटर्स होते हैं, अगर हम राइटर्स की एग्जांपल लें तो वो पास्ट में किसी भी राइटर को एज मॉडल बना के अपनी राइटिंग को मज़ीद इम्प्रूव करता है. कोई शेक्सपियर को अपना मॉडल बना लेता है, कोई डेंटो को अपना मॉडल बना लेता है. सो हमें यहाँ पर यह फॉस्टर ये कह रहा है कि वो बेसिकली रिलाई करता है पास्ट ट्रेडिशनल वर्क्स को कि वो उनके ज़रिए उनसे हिंट्स लेके उनको मॉडल बना के मॉडर्न एज को प्रेजेंट कर सके. He deeply studied the culture and civilization. That is why he is keenly interested in the thought of human being. The present condition moves on the behalf of old tradition. As I told you, the present condition moves on the behalf of old tradition means कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी किसी कल्चर को फॉलो कर रही है, सो इट इज़ नॉट कि वो अभी वाला कल्चर है. इट्स मीन्स कि हमें यह हमारे एंसेस्टर्स से चला हुआ हमारे पास आया है. बहुत से ईयर्स अगो हमारे पास ये यहाँ पर आया हुआ है और हम प्रेजेंट में उसको फॉलो कर रहे हैं. Our modern civilization will be destroyed forever. Obviously, why it will be destroyed forever? Because modern man is not following culture. He is not giving time to understand culture. The European civilization is good for Europe, but it is not good for the people of the world. अब यहाँ पर जो फॉस्टर है ना, वो थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन कर रहा है स्पेसिफिसिटी ऑफ कल्चर की, कि हर एक कंट्री की कल्चर स्पेसिफिक है जो कि उसको दूसरी कंट्री से डिस्टिंक्ट बनाती है. और हर एक कंट्री की कल्चर को स्पेसिफिसिटी देती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू देती है. अब जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन कल्चर है, सो इट इज़ गुड फॉर यूरोपियन पीपल बिकॉज इसके जो नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स हैं वो यूरोपियन पीपल से मैच करते हैं. लेकिन इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल फॉर द
people of other world. For Foster, it is culture is the understanding and enjoyment of art was regarded as the mark of culture. ओके कि जस्ट कल्चर को आर्ट आर्ट इज़ वर्ड, अगर आप लोगों को याद हो जॉन कीट्स की एक पॉम है ओल्ड ऑन अ ग्रेशियन आर्ट, उस आर्ट पर ना डिफरेंट पिक्चर्स बने हुए थे और ये कहा गया था कि ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ये अभी तक है, ये अभी तक हैं, लेकिन इस पे जो पिक्चर्स बनी हुई ये लोग ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन ये आर्ट अभी तक ज़िंदा है, आर्ट अभी तक मौजूद है और जितने भी लोग हैं डिफरेंट कंट्री से आते हैं और इसको देख के एंजॉयमेंट हासिल करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि आर्ट किस चीज़ के बारे में है, फिर वो इससे एंजॉयमेंट हासिल करते हैं। सो फॉस्टर भी यही कहता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ आर्ट, कि आर्ट को समझना, सिर्फ समझना बल्कि इसको इंजॉय भी करना, जब आप किसी चीज़ को समझे ना फिर आप इसको इंजॉय खुद बहुत करने लगते हैं, वॉज रिगार्डेड एज मार्क ऑफ कल्चर। ये बेसिक पिलर है कल्चर का। फॉर एग्जाम्पल आपको ज़बरदस्ती कोई रूल सिखा ले, ठीक है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ये कल्चर है और हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं है, हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं, ओके, बट अगर आप उसको समझ ना सके और आप रट्टों की तरह रट लें तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, आप जस्ट एक कैरी बनकर उस चीज़ को फॉलो करेंगे। सो इट वुड बी नॉट, ईदर यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, ईदर नॉट यू विल नीदर यू विल अंडरस्टैंड इट नॉट यू विल follow it, enjoy it. Foster states in his essay that people lack knowledge of appreciating art, again criticizing the modern man. He also says that people have to appreciate art and culture by communicating to their neighbors about their enjoyment. इस लाइन से इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न मैन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहा है और वो साइंस और टेक्नोलॉजी की एरा में इतना खो गया है कि वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। जैसे हमारे कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल्स में हम डिफरेंट लोग गैदर हो जाते हैं, एक कंपनी से मिल जाती है, लोगों को अंडरस्टैंड करने का मौका मिल जाता है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के एरा ने ना ये चीज़ें सब ख़त्म कर दी हैं। कोई फेस्टिवल्स ही नहीं होते, कोई गैदरिंग ही नहीं होती कि लोग एक दूसरे को समझ सके। Foster believes in the past tradition as well as culture, and he also speaks in the favor of modern culture. To him, past is a key to present and future. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी कल्चर, से ये अभी का कल्चर नहीं है, ये तो बहुत से पुराने का और पुराने से बहुत ईयर्स अगो यहाँ पर चलता आ रहा है। मीन्स हम अपने पास अपने इंसिस्टर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर प्रेजेंट में उनको उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और हम मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हैं अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को। प्रेजेंट इज़ पिलर ऑफ फ्यूचर। ज़ाहिर बात है आप जब अपने प्रेजेंट को पे फोकस करेंगे तभी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। सिमिलरली द प्रेजेंट एंड द पास्ट आर द मिरर ऑफ द फ्यूचर। वी शुड बिलीव इन द पास्ट। अब फॉस्टर क्या कहता है कि वी शुड बिलीव इन द पास्ट। हमारे अबाव अजाद जो कहा, हमारे लिए जो काम छोड़े, हमें उन पे बिलीव करना चाहिए। वर्क इज़ रीसेंट, प्रेजेंट में उन पे काम करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, देन द फ्यूचर विल बी फ्रूटफुल। जैसे मॉडर्न मैन कहता है कि कल्चर तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे एरा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो हम क्यों कल्चर को फॉलो करें। मीन्स वो पास्ट को भूल रहे हैं, प्रेजेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर भी फ्रूटफुल नहीं होगा। द पीपल शुड नॉट बी pessimist. Pessimist in a sense, as you know that science and technology shattered the religious faith of modern people. They become fragmented. Okay, they should try to achieve their bright goals. The author again says that the development of culture is the fundamental right of modern people. When people are in two ways, they should work according to their determination. Means अगर दो लोग हैं, for example दो तरह के people हैं, उनके डिफरेंट वेज हैं अपने काम को, अपने गोल को अचीव करने का। सो बेसिकली दे शुड वर्क अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेशन। जो इनकी डिटर्मिनेशन है वो उसके मुताबिक काम करें। Foster again says culture is a kind of ambrosia. Ambrosia means nourishing and enhancing source, which help us in receiving the power to enjoy the classics, traditional works. It's not only British culture but the culture of every nation that has its sacred importance. Again वही बात, ये हर एक का जो कंट्री का कल्चर है वो दूसरे से डिफरेंट है और ये हर एक कल्चर को स्पेसिफिसिटी देती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द डस कल्चर मैटर। लेट्स delve into the important points of the essay Does Culture Matter? So this essay is a non-fiction part of literature, as you know. So same like Matthew Arnold and T.S. Eliot, A. Foster was also worried about the attitude of modern man towards culture and classical writers and poets. कि वो मॉडर्न मैन ये कहता है कि मिस टी एस एलियट और
मैक्यू ऑर्लेट की तरह इयान फॉस्टर भी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जो मॉडर्न मैन है ये तो कल्चर को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, एंजॉय करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का एरा है और साइंस और टेक्नोलॉजी के एरा ने ना इट हैज़ वाइट आउट दी पास्ट ट्रेडिशंस क्लासिकल पोइट्स। जिस तरह डांटे हो गए, कोई डांटे को नहीं पढ़ रहा, तो जब उन किसी को मॉडल बना के आगे नहीं चलेगा तो फिर वो कैसे फ्यूचर में कामयाब होगा। In the first line of the essay, Forster says that culture is a forbidding word. It's satire on modern man because nowadays people are giving up the old traditions and their culture. They says that following culture is a waste of time. Due to modern technology like cinema ruined the theater, drama, and so new and upcoming inventions will vanish the cinema. अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है जो कि फॉस्टर ने दी हुई है कि जिस तरह से पहले ज़माने में स्टेज ड्रामा हुआ करते थे, स्टेज एक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन जब सिनेमा आ गया तो फिर ये ड्रामा वगैरह ख़त्म हो गए। अब मज़ीद ऐसे इन्वेंशंस भी आएंगी जो कि इस सिनेमा को भी ख़त्म कर देंगी। इन द सेम वे वो कह रहा है कि किस तरह से पहले लोग कल्चर को फॉलो करते, लेकिन जब एरा आ गया टेक्नोलॉजी एंड साइंस का, उसने किस तरह से मॉडर्न मैन को कल्चर से फार अवे कर लिया। Dante is a last case, but unfortunately nowadays there is no value of classical writers like Shakespeare and Dante. फिर वो अगेन क्लासिकल पोइट्स एंड की एग्जांपल लेता है कि डेंटे जो कि एक इटालियन पोइट था। सो कि लोगों को कि मॉडर्न मैन के पास टाइम नहीं है कि कोई इसके डेंटे या शेक्सपियर के वर्क को पढ़े और उससे मीन्स के मॉडर्न राइटर्स जो हो गए। और अगर उसने ये फॉस्टर ये भी कहता है कि अगर मॉडर्न मैन इस हद तक जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि अगर किसी प्रीवियस राइटर का, फॉर एग्जांपल आप डेंटी की एग्जांपल ले ले, कोई नावल, कोई राइटिंग जो है वो फेमस होती है तो दे गेट जेलस्ड एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड मोर कि किस तरह से प्रीवियस राइटर्स के जो थिंग्स जो है, राइटिंग्स जो है वो फेमस हो रही है, हमारी क्यों नहीं फेमस हो रही। रादर दैन टेकिंग फुट्स एज अ मॉडल, रादर दैन मेकिंग मॉडल्स दैम, वो उनसे जेलस होते हैं और मोर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मॉडर्न नॉवलिस्ट शो हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स ट्रेडिशनल नॉवलिस्ट। एक पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। Nowadays people do not have time to read the works of Dante, nor they have time to read about Santa Sofia. Santa Sofia it was in art, okay. ये चर्च था बेसिकली, लेकिन जब सल्तनत उस्मानिया आया, मोहम्मद II ने इसको मॉस्क बना लिया, मस्जिद बना लिया। फिर अगेन मुस्तफ़ा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मुस्तफ़ा अतातुर्क ने इसको अगेन म्यूज़ियम बना लिया। फिर अभी जो रिसेंट लीडर हैं तुर्की के, इसने इसको अगेन मॉस्क बना लिया। फॉस्टर सेज दैट वंस सर रिचर्ड टेरी, okay, first let me tell you who was Sir Richard Terry. He was born in 1865 and died in 1978. He was a British musician, conductor and musicologist. He is best known for his work as the director of Westminster Cathedral Choir. बेसिकली वो जो था, ये जो वो होते हैं, ही वॉज ऑर्गेनाइज्ड, प्ले विद ऑर्गन्स, जो कि रिलीजियस सॉन्ग्स संग करते हैं। सो ये वो वाला वो था। तो रिचर्ड मीन्स कि ओल्ड ट्रेडिशन, एक पास्ट में एक पास्ट की तरफ रेफरेंस है। फॉस्टर कहता है कि सर इसकी जो फॉस्टर है वो इसका रेफरेंस देता है अपने ऐसे में कि सर रिचर्ड टेरी प्रोवाइडेड सम यंग म्यूजिशियंस एंड टोल्ड देम दैट दे कुड बी ईदर मैन और क्रूनर्स। क्रूनर्स कहते हैं जो फास्टली प्रिटेंड करते हैं, दे डोंट नो नथिंग बट दे फास्टली प्रेजेंट देमसेल्व्स दैट दे नो मैनी थिंग्स when they grew up, but not both. On which young musicians used harsh words, like one said, "We are earning money more than Sir Richard Terry," and another said that he and his friend will knock down Sir Richard Terry one day. So they must be men. So basically वो यहाँ पर अगेन क्रिटिसाइज कर रहा है मॉडर्न मैन को कि वो किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, किस तरह से इम्पेशेंट किस तरह से इम्पेशेंट हो चुका है कि जब एक ऑर्गेनिस्ट था, जब उसने ये कहा कि कुछ यंग म्यूजिशियंस को कि आप लोग या तो म्यूजिशियंस बन सकते हैं या फिर क्रूनर्स बन सकते हैं, आप या तो आदमी बन सकते हैं या फिर क्रूनर्स बन सकते हैं। जिस पर एक म्यूजिशियन ने वो हार्श वर्ड्स यूज़ किए कि हम तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ जो है वो नीचे मतलब तुम्हें मार दूंगा। सो इट्स मीन्स कि आई एम अ मैन, वी आर मैन। या फिर दूसरे ने कहा कि हम तो तुमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मीन्स के उसको मनी के ज़रिए और मार पीट के ज़रिए अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहे थे वो दोनों। तो बेसिकली इट इज़ अ लैक ऑफ कल्चर, सिविलाइजेशन, अनसिविलाइज्ड।
Foster says that civilization is the organization of culture. Culture cannot be formed without civilization. In the same way, civilization cannot be thought without culture. Foster says that understanding civilization is important for enjoyment. With आप जब तक उन रूल्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, सोशल नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ को, तब तक आप उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मैन डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग culture and civilization, nor they have the power of enjoyment of cultural values and art. Culture makes the people honest, civilized, and disciplined. British culture is good, but for the people of England, not for the other parts of the world. Again, specificity of culture. Not only British culture, but every culture has sacred rules and norms. Culture is overgrowing. Changes come in every culture with the passage of time. Obviously, अगर हम देखें कि हमारे इंसिस्टर्स का जो कल्चर था उनके ज़माने में, हम कहते हैं ना, हम ये कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था, ये तो इस दौर में हो रहा है, हम तो ऐसा नहीं करते थे, आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं. सो बेसिकली इट इज़ व्हाट इज़ जनरेशन गैप. इट इज़ व्हाट कि हम चेंजेस आ रही हैं, हमारे कल्चर में चेंजेस आ रही हैं, कल्चर इज़ ओवर ग्रोइंग. वी नीड नो. अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, एंडिंग लाइन्स भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स भी हैं, कि वी नीड नॉट टू फोर्स पीपल टू फॉलो ट्रेडिशन एंड कल्चर, बट वी हैव टू शाइन एंड एडवर्टाइज आवर कल्चर एंड मेक द कल्चर एंजॉयबल फॉर द मॉडर्न मैन. ये फॉस्टर ये कहता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम मॉडर्न मैन को फोर्स नहीं कर सकते, कि क्या जब किसी को फोर्स करेंगे किसी चीज़ को फॉलो करने में, सो वो उस चीज़ को फॉलो तो कर लेगा, बट नॉट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग. पहले तो फॉलो नहीं करेगा, बट इफ ही गेट फॉलोड इट, he will be not interested in it, he will not understand it, and he will not be even able to enjoy it. फिर उसको अंडरस्टैंड, फिर उसको वो फोर्स करने का फ़ायदा क्या हुआ. ओके, बल्कि वो ये कहता है कि हमें अपने कल्चर को ऐसे, हमें अपने क्लासिकल वर्क्स को, ट्रेडिशनल वर्क्स को, अपने कल्चर को ऐसा बनाना होगा, ऐसा शाइनिंग बनाना होगा कि मॉडर्न मैन खुद इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और ख़ुद इसको फॉलो करे. ओके, मीन्स नो नीड टू फोर्स. बेसिकली वो यहाँ पे पैशंस की बात कर रहा है और जनरेशन गैप की बात भी कर रहा है, कि हमें उस जनरेशन गैप को ख़त्म करना होगा जो पास्ट और प्रेजेंट में है और जो कि फ्यूचर को ख़राब कर रहा है. हमें उस जनरेशन गैप को ख़त्म करना होगा और हमें उन पैशंस को लाना होगा, उन पैशन को एक मॉडर्न मैन के अंदर डालना होगा कि वो अपने कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट करे, अंडरस्टैंड करना और एंजॉय करना स्टार्ट करे, वैल्यू करना स्टार्ट करे. सो जो ऐसे का नेम है डज कल्चर मैटर. सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू फॉस्टर इट मैटर्स, बिकॉज इन दिस ऐसे वो क्लासिकल वर्क्स की, क्लासिकल राइटर्स की, क्लासिकल पर्सनैलिटीज़ की एग्जाम्पल देते हुए पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जो जनरेशन गैप है वो ख़त्म हो सके, और कल्चर की इम्पोर्टेंस को बार बार हाईलाइट कर रहा है. आई एम होपफुल दैट दिस वीडियो इज़ will be very fruitful to you, and you have got it very well about the essay Does Culture Matter by Ian Forster. Okay, in the next video I will share the topics, the explanation of the essay paragraph wise, so that you may get idea about the text of Does Culture Matter. आपको टेक्स्ट की समझ भी आ जाएगी कि क्या क्या स्पेसिफिक लाइन्स की क्या क्या ट्रांसलेशन है. इफ़ यू आर having a reference to a context question in a paper, or you are going to understand the topic for any other exam, so these videos will be gonna very helpful to you. So up till now it was about all these, that is the summary and important points. Hope so you have understand well. Thank you.